Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavallabha Giri Varadhari. Jai Gopi Janavallabha Giri Varadhari. Yasodhanandana Braja Dhanarhanjanam. Yasodhanandana Braja Dhanarhanjanam. Jamuna Thira Vanachari. Jamuna Thira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Janavallabha Giri Varadhari. Jai Gopi Janavallabha Giri Varadhari. Yasodhanandana Braja Dhanarhanjanam. Yasodhanandana Braja Dhanarhanjanam. Jamuna Thira Vanachari. Jamuna Thira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janavallabha Giri Varadhari. Jai Gopi Janavallabha Giri Varadhari.
Sodanandana Gajajananda Jasodanandana Gajajananda Jamuna Tira Jamuna Tira Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Janavallabha Girivardhana Gopi Jai Gopi Janavallabha Girivardhana Sodanandana Gajajananda Yasodanandana Gajajananda Jamuna Dhira Jamuna Dhira Harim Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gaur Premanande Prabhupada ki Jai Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radharani ki Jai Mahadani ki Jai Radharani ki Jai Maharani ki Jai Varsana Valiki Jai 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 Bolo Varsana Valiki Bolo Radharani ki Jai Maharani ki Jai Radharani ki Jai Maharani ki Jai Bolo Varsana Valiki Jai 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 Bolo Jai Jai Radharani ki Jai Radharani ki Jai Radharani ki Jai Maharani ki Jai
Jaya Radha Madmoha Radha Madmoha Shri Radhe. Jaya Radha Madmoha Radha Madmoha Shri Radhe. Jaya Radhe 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 Jai Shri Radhe. Jaya Radhe 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 Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jai Shri Radhe. Nithai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Hari. Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada. And Prabhupada 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 Jai Prabhupada. Shrimati Radharani Mahamahotsav Avirbhav Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. I chose this one verse from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 13, the Lord's dancing at Rath Yatra. तो मध्य लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 13 से मैंने ये श्लोक चुना है। इसमें है भगवान का दिव्य नृत्य रथ यात्रा के समय। महाप्रभु Rajavasi Yata Janam Mata Pita Sakagana 150. 150. Rajavasi Yata Janam Mata Pita Sakagana व्रजवासी Sabahoy Moya Prana Sama. Let's get the meter right. Okay. Rajavasi Yata Janam Mata Pita Sakagana Sabahoy Moya Prana Sama. Tandra Madhya Gopigana Saka Saksar Mora Jivana Tume Mora Jivanera Jivana Rajavasi Yate Jana Mata Pita Sakagana Sabahoy Moy Prana Sama Tandra Madhya Gopigana Saksa Mora Jivana Tora More Jivanera Jivana. Someone? ब्रजवासी जत जन माता पिता सखागण सबे होए मोर प्राण सम तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन तुमी मोर जीवनेर जीवन। Ladies?
Rajavasi Yata Jana. All the inhabitants of Vrindavan Dham. Mata, mother. Pita, father. Sakagana, boyfriends. Sabe, all. Hoi, all. Mora prana sama. As good as my life. Tanramadye. Among them, Gopigana, the gopis. Shakshat, directly. Mora jivana, my life and soul. To me, you. Mora jivanera jivana, the life of my life. So, Sri Krishna is speaking, and he continues. This is a continuation. All the inhabitants of Vrindavan Dham, my mother, father, cowherd boys, friends, and everything else are like my life and soul. And among the inhabitants of Vrindavan, the gopis are my very life and soul. And among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are the very life of my life. अनुवाद श्री कृष्ण ने आगे कहा, वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरे माता, पिता, ग्वाल सखा तथा अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों में से गोपियां तो मेरे प्राण के समान हैं और गोपियों में हे राधा रानी तुम मुख्य हो, अतएव तुम मेरे जीवन का भी जीवन हो। Purport. Srimati Radharani is the center of all Vrindavan activities. In Vrindavan, Krishna is the instrument of Srimati Radharani. Therefore, all the inhabitants of Vrindavan still chant Jai Radhe. From Krishna's own statement given herein, it appears that Radharani is the queen of Vrindavan and that Krishna is simply her decoration. Krishna is known as Madan Mohan, the enchanter of Cupid. But Srimati Radharani is the enchanter of Krishna. Consequently, Srimati Radharani is called Madan Mohan Mohini, the enchanter of Cupid. तात्पर्य, श्रीमती राधारानी वृंदावन के समस्त कार्यकलापों की केंद्र बिंदु हैं। वृंदावन में कृष्ण श्रीमती राधा रानी की कठपुतली हैं, इसलिए आज भी सारे वृंदावनवासी जय राधे का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के अपने स्वयं के कथन से ऐसा लगता है कि राधा रानी वृंदावन की महारानी हैं और कृष्ण मात्र उनके अलंकरण हैं। कृष्ण को मदन मोहन कहा जाता है, किंतु श्रीमती राधा रानी तो कृष्ण को भी मोहने वाली हैं। फलस्वरूप श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कहलाती हैं। Om Agyan Timidandasya Ganajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyatya De Satarine Panchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Bevacha Ditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhaktivinoda Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Echo Bahuna Shyam, Krishna is one. एको बहुश्याम, Bahusham. कृष्ण जो हैं वो एक हैं। There is
Krishna is the absolute principle of all existence. कृष्ण जो हैं जितना भी चराचर सृष्टि है उसके जो है मुख्य तत्व हैं। But for the sake of exchanging love or relationships, he expands himself into many. लेकिन संबंधों का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण अपने आप का विस्तार कई रूपों में करते हैं। One cannot enjoy by themselves. कोई व्यक्ति अकेले अकेले सुख भोग नहीं कर सकता है। Enjoyment means two, and, आनंद प्राप्ति के लिए कम से कम 2 लोग होना चाहिए and even more, many. और अधिक आनंद के लिए और अधिक। So the principle of enjoyment is the principle of life. तो जो आनंद का सिद्धांत है यही जीवन का सिद्धांत है। And Krishna has different manifestations of his own energies by which he accomplishes his own desires. तो कृष्ण जी की शक्तियां हैं, उनके कई तरह से वो प्रकट करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। Sandhini, Samvit, and Ladini. 3 मुख्य शक्तियां हैं, संधिनी, संवित, लादनी। Sandhini is the energy of all existence by which everything unfolds. संधिनी जो है जितना भी प्राकट्य है वो उसके द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके द्वारा ये Both the spiritual and spiritual existence, material creations, unfolds from his internal energy. आध्यात्मिक जगत का प्रकट और भौतिक जगत दोनों ही जो है संधिनी शक्ति के द्वारा What प्रकट is होते हैं। manifested in different varieties of himself for the sake of existence. तो संधिनी शक्ति के द्वारा जो अलग अलग अस्तित्व हैं वो प्रकट होते हैं भौतिक जगत। Another energy is Samvit. Samvit is his all-knowing energy by which Krishna knows everything at all times and in all places. दूसरी शक्ति है संवित, सब कुछ जानने वाली शक्ति, जिसके द्वारा कृष्ण सभी जगह, सभी समय, सभी स्थानों पे क्या हो रहा है वो जानते हैं। And he has a third energy, prominent. He has many energies, but his prominent energy is the Ladini energy, which is the pleasure-giving energy. इस तरह कई शक्तियां हैं, लेकिन सबसे मुख्य शक्ति है लादिनी, आनंददायिनी शक्ति। But he expands himself into many for the sake of loving exchange. कृष्ण जो है अपना विस्तार कई रूपों में करते हैं प्रेममय आदान प्रदान करने के लिए। And the principal expansion of that energy, or the foundation of that energy as it expands into many varieties of the same energy, is Srimati Radharani. और लादनी शक्ति जो आनंददायिनी शक्ति है वो कई रूपों में अपने को प्रकट करती है कृष्ण को आनंद देने के लिए, लेकिन जो मुख्य विस्तार है वो है राधा रानी। There's no difference in one sense, in the absolute sense, between Radha and Krishna. हम परम स्तर पे, चिन्मय स्तर पे देखें तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। But as Krishna, everything is actually, Srila Prabhupada would also mention this. He would say, everything is Krishna. There's nothing outside of Krishna. श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें मोहन की जय, तो सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण से बाहर कोई अस्तित्व है ही नहीं। Everything is Krishna. सब कुछ कृष्णमय है। In one lecture, Srila Prabhupada wanted to make a point. एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद एक बात बताना चाह रहे थे। So he made a particular point that was very confusing for those who were listening. तो उन्होंने कुछ ऐसा एक बिंदु स्पर्श किया जो श्रोताओं के लिए बहुत ही संशयग्रस्त करने वाला था। He said, everything is Krishna. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा सब कुछ कृष्ण है, There's nothing else but Krishna. कृष्ण के बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं है। You're Krishna, I'm Krishna, we're all Krishna. तुम भी कृष्ण, मैं भी कृष्ण, हम सभी कृष्ण। And then of course, the devotees were completely bewildered. जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस तरह बता रहे थे तो सारे भक्त बड़े ही भ्रम में पड़ गए। So as Prabhupada always saying, if you think you're God, you're a dog.
क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे यदि आप सोचेंगे कि मैं भगवान हूँ तो इसका मतलब आप कुत्ते हो। You think you're God, you're kukura. Right? आप सोचते हो कि मैं भगवान हूँ तो फिर कुकुर कुकुर हो जाते हो। Yeah, dog. So now he's saying everybody's God and we're all God and everything's God. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप भी कृष्ण, मैं भी कृष्ण, सब कृष्ण। Prabhupada was speaking from the absolute principle of existence. तो प्रभुपाद जी जो हैं वो चिन्मय स्तर से इस बात को बता रहे थे That because Krishna is the source of everything, everything that comes from him is non-different than him. क्योंकि कृष्ण सभी का स्रोत है, तो कृष्ण से जो भी प्राकट्य होता है वो कृष्ण से अभिन्न है। But for the sake of activities and functions and relationships, everything is one with and different from at the same time. लेकिन अगर कार्य की दृष्टि से देखें सभी की अलग अलग, तो वो एक साथ कृष्ण के साथ एक भी हैं और साथ में वेद भी है और अभेद भी है। Krishna manifests in varieties of himself for his own transcendental pleasure or in order to carry on the affairs of the spiritual and material existence. Ultimately, everything is coming from him. तो इस तरह कृष्ण विविध रूपों में अपना प्राकट्य करते हैं दो कारणों से, एक तो दिव्य आदान प्रदान करने के लिए प्रेम का, या फिर दूसरा इस भौतिक जगत की सृष्टि और इस भौतिक जगत के परिचालन के लिए। But the principle of life is love. लेकिन ये जीवन का जो मुख्य सिद्धांत है वो है प्रेम करना। Some people ask, well, what is actually the essence of all activities of life? What is life all about? जो जीवन है इसके जितने भी हम कार्य करते हैं उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? It's a, मुख्य and the answer is a life is about pleasure. और मुख्य सिद्धांत यही है, इसका उत्तर है कि जीवन जो है वो आनंद के लिए है। The foundation for all activities is to experience pleasure. जितने भी हम कार्य करते हैं उनके पीछे हमारी मूलभूत धारणा यही है कि इन कार्यों से आनंद प्राप्त करना है। So where does that quality come from? तो ये जो आनंद प्राप्ति का जो गुण है ये कहाँ से आ रहा है? It comes from Krishna. ये कृष्ण से ही आता है। Whatever Krishna does, he does it for his own pleasure. कृष्ण जो भी करते हैं वो आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं। And he invites us, the living entities, to take part in exchanging loving relationships with him to experience the highest form of pleasure. और कृष्ण साथ ही सभी जीवों को उपदेश देते हैं कि जीव कृष्ण के साथ जब दिव्य आदान प्रदान करेंगे तो जीवों को भी ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। But he manifests that quality in his initial expansion in his Ladini Shakti as Srimati Radharani. तो कृष्ण ये जो आनंद प्रदान करने वाली जो ये गुण है इसका प्राकट्य शुरू में करते हैं लादनी शक्ति के रूप में। She is the internal pleasure-giving energy to Krishna, but she also manifests herself in different varieties of herself to increase Krishna's pleasure. तो जो श्रीमती राधा रानी हैं वो अंतरंगा लादनी शक्ति हैं कृष्ण को, लेकिन साथ ही वे कई रूपों कई तरीकों से भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए विस्तार करती हैं। Because without variety, there is really no pleasure. क्योंकि जब तक विविधता न हो तब तक आनंद। सर कहते हैं कि विविधता में जो है आनंद और अधिक बढ़ जाता है। Variety gives life pleasure. विविधता जो है वो आनंद प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है। So in order to give Krishna more and more pleasure, Radharani expands herself into various manifestations of herself in different realms of both the spiritual and the material existence. तो कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी कई प्रकार के विस्तार करती हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। All the gopis are expansions of Srimati Radharani. जितनी भी गोपियां हैं वो श्रीमती राधा रानी से प्रकट हुई हैं। All the Lakshmis
are also expansion of Srimati Radharani. जितनी लक्ष्मियां हैं वे भी श्रीमती राधा रानी का विस्तार ही हैं। And all the queens of Dwarka are also expansions of Srimati Radharani. और द्वारका की सारी रानियां भी जो हैं वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार हैं। She's the initial female manifestation of the pleasure potence of Krishna, which gives variety of pleasures to Krishna. तो श्रीमती राधा रानी जो हैं प्रारंभिक स्त्री रूप का प्राकट्य हैं भगवान कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति का, और फिर वो अलग अलग रूपों से भगवान कृष्ण को So आनंद you प्रदान might करते हैं। say she's the best servant of Krishna. इसलिए इसे कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और सबसे उत्तम सेविका हैं। But at the same time, she is none different than Krishna. साथ ही वो कृष्ण से अभिन्न भी हैं, अलग नहीं हैं उनसे, एक हैं। To understand Radharani's relationship with Krishna is not possible. कृष्ण और राधा रानी के बीच संबंध को समझ पाना ये संभव नहीं है। Sometimes we say there's two things. कभी कभी हम कहते हैं कि दो चीजें कोई भी नहीं जानते हैं। Two things that we can never know, that nobody knows. दो चीजें जो हम नहीं जानते हैं और कोई भी नहीं जान सकते। Radharani's love for Krishna एक है कृष्ण के लिए राधा रानी का जो प्रेम है, and Krishna's qualities. और दूसरा कृष्ण के गुण। So it's described in one book written by Lochandas Thakur तो लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित एक पुस्तक में ये वर्णन किया गया है कि that Krishna was in Dwarka with his principal queen Rukmini. कृष्ण एक बार द्वारका में अपनी मुख्य पटरानी रुक्मिणी के साथ थे, And Rukmini was massaging Krishna's lotus feet. रुक्मिणी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर रही थी, And she was expressing such emotional happiness. She was beyond herself in happiness and crying tears of happiness, just massaging Krishna's feet. और इस तरह भावमय आनंद में थी कि कृष्ण के चरण कमलों की मालिश करते हुए आनंद में आंसू बहा रही थी। And then she started to speak. और फिर रुक्मिणी कहने लगी कि You don't know how wonderful you are. कृष्ण, आपको पता नहीं कि आप कितने अद्भुत हैं। Nobody knows how wonderful you are. वास्तव में कोई नहीं जानता है कि आप कितने अद्भुत हैं। Even you don't know how wonderful you are. यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं जानते कि आप कितने विशेष हैं। There's a story where Krishna's walking in Dwarka. He's just walking along. तो एक कथा आती है कि कृष्ण जो हैं द्वारका में एक बार जा रहे थे, And there's this big column, pillar. और एक बहुत बड़ा स्तंभ वहाँ पे था, And it had a reflecting mirror-like image. और वो जो है आईने के सदृश जो है वो परछाई चेहरा उसमें दिख रहा था। So Krishna's walking past it. And he walks past it. He thinks, who is that? और कृष्ण जब स्तंभ के पास से निकलते हैं तो अपना चेहरा उसमें दिखता है आईने में, तो बोलते हैं कि ये कौन है ये व्यक्ति। He goes back to look. Oh, it's me. फिर बाद में उनको ध्यान आता है, अरे ये तो मैं ही हूँ। So Krishna tracks himself. कृष्ण स्वयं खुद को आकर्षित कर लेते हैं। He's the principle of all attractiveness. तो सर्व आकर्षकता का जो सिद्धांत है कृष्ण। So Rukmini is speaking and offering her love. And then she finally says, there is actually only one person who knows how wonderful you are. तो रुक्मिणी जो हैं इस तरह अपना प्रेम व्यक्त कर रही हैं कृष्ण के पास में, और फिर बाद में वो कहती हैं कि वास्तव में एक ही व्यक्ति है जो वास्तव में जानता है कि आप कौन हैं। Now Krishna is really listening. He wants to know who that person is. कृष्ण ध्यान से सुन रहे हैं, कृष्ण भी जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आखिरकार है कौन। You don't know how wonderful you are. आपको भी पता नहीं है कि आप कितने अद्भुत हैं, But there's one person who does. लेकिन एक व्यक्ति जानता है कि आप कितने अद्भुत हैं। And then she speaks. और तब रुक्मिणी देवी कहती हैं कि Srimati Radharani.
श्रीमती राधा रानी जानती हैं कि आप कितने अद्भुत हैं। So the Lord is thinking, only she knows how wonderful I am. तो भगवान सोच रहे हैं, ओ अच्छा, वो ही जानती है कि मैं कितना अद्भुत हूँ। I don't know how wonderful I am. मैं नहीं जानता कि मैं कितना अद्भुत हूँ। I have to find out how wonderful I am. मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या मैं कितना विशेष हूँ। And what is it about her that attracts her to me? और राधा रानी में ऐसा क्या है जिसके कारण वो मेरे प्रति आकर्षित होती And हैं what is that experience she's having in that attraction? और मुझसे आकर्षित होके उन्हें क्या अनुभव होता है। So the Lord decided, let me become her. तो भगवान ने निश्चय किया कि मैं ही राधा रानी बन जाता हूँ। But I can't become her because I am me. लेकिन मैं तो उस जैसा नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो मैं हूँ। But I'll become me with her mood. लेकिन मैं बनूंगा, लेकिन भाव उनका होगा। So that's Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो वही है श्री चैतन्य महाप्रभु। And so that is the reason for the manifestation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, to experience how wonderful Krishna is in her mood towards her love for him. What is the happiness she's experienced, and what is the qualities about him that attracts her to him. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इसलिए है ताकि ये पता चल सके कि राधा रानी का जो है कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है और राधा रानी क्या अनुभव करती हैं जब वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होती हैं। तो Therefore, the incarnation of Lord Chaitanya Mahaprabhu is manifested for him to fulfill his own desire to understand what is her love for him in the position of her. तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इसलिए है कि क्योंकि भगवान की स्वयं की इच्छा है कि भगवान जानना चाहते हैं कि राधा रानी की क्या स्थिति होती है मेरे प्रेम में और राधा रानी का प्रेम मेरे लिए किस तरह से है। And Radharani is very merciful. राधा रानी जो हैं बहुत ही कृपालु हैं। Today we fast, what, half a day? आधा दिन आज उपवास किया है And on Krishna's appearance we fast और कृष्ण के अवतरण पे भी हम उपवास तो करते ही हैं। how long? कितना उपवास होता है? Midnight. मिडनाइट, दो रात, आधी रात तक। Who's more merciful? कौन ज्यादा कृपालु है? Prabhupada would say, mother is more kinder than father. रूपा जी कहते थे कि पिता की तुलना में माँ ज्यादा कृपालु होती है। Krishna is kind. But the manifestation of his kindness has reached supreme perfection in Srimati Radharani. तो कृष्ण तो दयालु हैं ही, लेकिन उनकी दयालुता की जो चरम सीमा है या चरम पूर्णता है वो है श्रीमती राधा रानी। In order to understand Krishna or to receive the mercy of Krishna, one has to get the mercy of Srimati Radharani. कृष्ण को समझने के लिए या कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले श्रीमती राधा रानी की कृपा की आवश्यकता है। And Srila Prabhupada writes in this one song he wrote, he was coming over in the Jaladuta to New York. He wrote a beautiful song. And in one line he writes, Radharani Sukhi Hubby. श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही विशेष गीत लिखा जब वो जलदूत से जा रहे थे अमेरिका। तो एक गीत में वो लिखते हैं, राधा रानी खुशी हवे, No, Sukhi Hubby. सुखी हवे। We discussed that point once between the devotees, and the actual understanding is Sukhi, not Kushi. एक बार हमने भक्तों के मध्य चर्चा की थी, तो वास्तविक इसकी जो समझ है खुशी नहीं, ये सुखी होना। But it doesn't matter because they mean the same practically. लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का अर्थ एक ही है। That's controversial. This is not a controversial class. Repeat that. And Prabhupada explains that only in that song, only when Srimati Radharani becomes, she favors you, only when she favors you, only then will your bhakti become successful. श्रीलोपा समझाते हैं कि जब जब और केवल तब जब राधा रानी आपके ऊपर कृपा करती हैं,
तब आपकी भक्ति जो है पूर्ण होती है। So we pray for her mercy. हम उनकी कृपा के लिए याचना प्रार्थना करते हैं। But she manifests herself in the role of Krishna in herself. She Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya, that Radha and Krishna have become. So we try to get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is also the mercy of Srimati Radharani. तो वो अपना प्राकट्य करती हैं जब कृष्ण और राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो भी जो है एक तरह से राधा रानी है। And if you receive them, in order to receive the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, you need the mercy of Nityananda. और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। In order to get the mercy of Nityananda, you have to get the mercy of your spiritual master. नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा की आवश्यकता है। In order to get the mercy of your spiritual master, you have to get the mercy of the Vaishnavas who bring you to your spiritual master. और आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको वैष्णव की कृपा की आवश्यकता है, जो वैष्णव आपको आपके आध्यात्मिक गुरु तक लेके जाते हैं। But it's all connected. एक तरह से सभी आपस में जुड़े हुए हैं। So we pray for the mercy of the Lord, the spiritual master, and particularly for the mercy of Srimati Radharani to understand Krishna's pastimes in Sri Vrindavan Dham. तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, आध्यात्मिक गुरु से, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं ताकि हम कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं हैं उनको हम समझ पाएं। And as Radharani, she doesn't think herself the best of all devotees, although she is. तो श्रीमती राधा रानी ऐसा सोचती नहीं है कि मैं सबसे अच्छी भक्त हूँ, हालांकि वो सबसे अच्छी भक्त हैं फिर भी। And therefore, if one is sincerely trying to serve, Radharani thinks, oh, that devotee is really trying to serve Krishna. She's better, he's better than me. और इसके कारण ही जब कोई निष्कपट भाव से, पूरी ईमानदारी से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो श्रीमती राधा रानी देख के खुश होती हैं और बोलती हैं, ओह! ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। ये मेरे से अच्छा भक्त है, ये Then she भक्त है। recommends that devotee to Krishna. और फिर कृष्ण के पास जाके उस भक्त के लिए वो प्रशंसा करती हैं, उस भक्त के And even बारे though में that बताती हैं। devotee is not very advanced, but because Radharani recommends, because she is easily pleased, then Krishna has to give his mercy. और भले ही हो सकता है वो भक्त बहुत ज़्यादा उन्नत भक्त ना हो, लेकिन चूँकि राधा रानी खुश हैं और कृष्ण को जाके उसकी सिफ़ारिश करती हैं, तो कृष्ण अपनी कृपा उसको भक्त को प्रदान कर देते हैं। So we always beg for the mercy of Radharani. Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Suti Devi, Pranamami Hari Priya. तो हम हमेशा राधा रानी की कृपा की भिक्षा माँगते हैं। When we chant the Hare Krishna Maha Mantra, we are chanting Hare Krishna. Hare refers to the internal energy, Srimati Radharani. जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा, तो जो हरे है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी को संकेत करता है। We cannot approach Krishna directly, but we can approach through the mercy manifestations of Krishna, particularly Radharani, or the spiritual master who is the manifestation of the mercy of Radharani, who offers us the opportunity to serve the Lord through the process of your devotional service. तो जब हम कृष्ण के पास जाने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण की कृपा का जो प्राकट्य हैं, उनके माध्यम से जाते हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के माध्यम से या फिर गुरुदेव के माध्यम से। गुरुदेव श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्राकट्य हैं और गुरुदेव जो हैं हमें इस तरह से अवसर प्रदान करते हैं कि हम शुद्ध भक्ति में सेवा में लग सकें। So today's Radharani's appearance. तो आज राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। So I'll speak something a little bit about her appearance in the world. तो मैं आज राधा रानी का आविर्भाव किससे हुआ उसके विषय में कुछ बताऊंगा। She comes every time Krishna comes in his form as the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna and Vrindavan. तो कृष्ण जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अपने रूप में प्रकट होते हैं वृंदावन धाम में। It's interesting, there's different
understandings or explanations of Radharani's appearance in the world. उस समय राधा रानी प्रकट होती हैं और ये बहुत रुचिकर है कि राधा रानी के प्राकट्य के बारे में अलग-अलग समझ है, अलग-अलग प्रसंग दिए गए हैं। So the Shastras give different stories or explanations of how Radharani appeared. शास्त्रों में अलग-अलग वर्णन है, अलग-अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरह राधा रानी प्रकट हुई। But the standard explanation is that King Vrishabhanu and his wife Kirtida were praying very hard and performing austerities for a child. लेकिन प्रामाणिक एक वर्णन में इस प्रकार है कि वृषभानु राजा और उनकी पत्नी कीर्तिदा बहुत तपस्या कर रहे थे और एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। After some time, Vrishabhanu was standing on the bank of the Jamuna River, तो कुछ समय बाद राजा वृषभानु यमुना नदी के किनारे पे खड़े थे and he was looking out into the Jamuna, और वो जमुना को निहार रहे थे and he saw a very bright effulgence coming from the Jamuna. और उन्होंने देखा कि जमुना से एक बहुत तीव्र चमकीला प्रकाश आ रहा है। And then he looked, and it looked like a gigantic lotus flower floating on the surface of the waters. और फिर उन्होंने देखा तो ऐसा उन्हें लगा कि एक बहुत ही बड़ा कमल का फूल जो है यमुना के पानी के ऊपर तैरता हुआ आ रहा है। So he was amazed to see this. तो उनको तो बहुत ही आश्चर्य हुआ ये देख के। And then Lord Brahma appeared. तब वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं And he went to that lotus flower, and in the middle of the lotus flower, there was a beautiful little tiny girl. और फिर वो उस कमल पुष्प के पास जाके उसमें देखते हैं तो उस कमल पुष्प के अंदर एक छोटी बहुत सुंदर बालिका है। He picked up the girl and he brought it to Vrishabhanu and said, "Here is your daughter, who you've been praying for." तो उन्होंने उस ब्रह्मा जी ने उस बालिका को उठाया और किनारे पे खड़े राजा वृषभानु को दिया, बोले ये है आपकी पुत्री जिसके लिए And, आप s- प्रार्थना कर रहे थे। and as soon as he touched Radharani, little baby, he started to feel ecstasy and overwhelmed with love and happiness. जैसे ही उस बालिका राधा रानी को स्पर्श किया वृषभानु ने तो उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा, He, प्रेम का। he brought the girl home, showed it to his wife Kirtida, and she also was so overwhelmed with joy to see this beautiful little girl, so sweet, so soft, so beautiful. तो फिर उसको अपने घर लेकर आए, अपनी पत्नी कीर्तिदा के हाथ में दिया, तो उनको भी जो है अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ उसको हाथ में लेके, इस छोटी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर बालिका को देख के। Babies are not generally beautiful except for the mother. Mother only the mothers can understand the beauty of the baby, nobody else. जो नवजात शिशु जन होते हैं, वो इतने ज़्यादा सुंदर नहीं होते हैं, माताओं को केवल लगता है कि वो बहुत सुंदर हैं। Brahmacharis see a baby, they don't get over, so excited. As the babies come out, and they're yeah, crying, like, जैसे संतान का जन्म होता है, तो रोते-रोते बाहर आते हैं, well, for the mother, love. लेकिन माँ को बहुत ही आनंद होता है। Even if there's no beauty there, they see beauty because they see through love. यदि वो संतान सुंदर न भी हो, लेकिन माँ को बहुत ही क्योंकि वो प्रेम चक्षु से देखती है, तो बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। So, but Radharani was different. लेकिन राधा Everyone, रानी की बात अलग है। she was not an ordinary baby. साधारण शिशु नहीं थी वो। So soon as Vrishabhanu and his wife saw them, they immediately felt overwhelmed with happiness, joy, and parental love. जैसे ही वृषभानु और कीर्तिदा ने उन्हें देखा, तो उन्हें बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ और पिता-माता का जो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, वो उमड़ आया। So they made a little cradle and put baby Radha in the cradle. तो एक पालकी या झूला कहें, ऐसा उन्होंने बनाया, श्रीमती राधा रानी को उसमें रखा। But one thing was quite different. लेकिन एक चीज़ जो है थोड़ी अजीब ही थी।
Radharani kept her eyes closed कि राधा रानी की आंखें बंद थी and she didn't make any sound. और कुछ बोल नहीं रही थी, Nothing. Completely quiet, eyes closed. एकदम चुप और आंखें बंद। And after a while, parents were thinking, maybe she's blind. कुछ समय बाद वो दोनों सोचने लगे, हो सकता है कहीं ये अंधी तो नहीं है Maybe she's deaf and dumb, can't speak. या फिर बहरी गूंगी तो नहीं है, बोल नहीं पाती है। So this was going on for some time. तो ऐसा कुछ समय तक उनके मन में विचार चल रहे And they थे, were concerned. There was no sound वो from the चिंतित child. थे। At one time, they decided, well, let's have a ceremony in honoring the new child. तो उन्होंने कहा कि एक चलो एक उत्सव मनाते हैं, नवजात शिशु का जन्म हुआ है। So they invited all the people in the village. तो उन्होंने गांव में जितने भी लोग थे सबको बुलावा भेजा। Before that, something else happened. लेकिन वो बुलावा भेजने, निमंत्रण भेजने के पहले एक और घटना हुई थी। Go back. थोड़ा पीछे जाते हैं। Narada Muni Bhajai Vina Radhika Ramana Namre. So Narada Muni, he knows what's going on. That the Supreme Personality of Godhead manifested as the internal energy of the Lord has appeared in the house of Vrishabhanu and Kirtans. So he wants to come and see. तो नारद मुनि जानते हैं क्या हो रहा है, तो नारद मुनि की इच्छा हुई कि भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी जो हैं प्रकट हुई हैं वृषभानु और कृतघर में, तो वो भी दर्शन करने के लिए आने को उत्सुक हैं। So he appears in the house. नारद And मुनि घर में प्रकट हो गए। Vrishabhanu, overwhelmed, the sage of the demigods has come. वृषभानु तो आनंद में अभिभूत हो गए कि देवऋषि आ गए हैं स्वयं। So he honors him very nicely. तो बहुत अच्छे से उनका आदर सत्कार करते हैं। Narada says, you have a child? हम कहते हैं कि संतान प्राप्त हुई आपको? Yes, beautiful girl. बोले हाँ, बहुत सुंदर लड़की का Where जन्म is हुआ she? है। कहाँ पे है? Come. आइए। So he comes. He looks into the cradle and there she is. तो नारद मुनि आते हैं और जिस पालकी झूले में राधा रानी है उसकी तरफ देखते हैं। Vrishabhanu says, you should hold the child. वृषभानु कहते हैं कि आप बच्चे को उठाइए गोद में। Thinking maybe this sage can give some blessings. उन्हें लगा कि साधु उठाएंगे तो आशीर्वाद प्राप्त होगा So he संतान picks को। up the baby and puts it on the lap of Narada. तो नारद मुनि की गोद में उठा के राधा रानी को रख देते हैं। Narada goes into ecstasy. He's trying to restrain his ecstasy because he doesn't want to say anything or give away who she actually is. नारद मुनि को जो है आनंद के कारण दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन नारद मुनि अपने आप को संयमित करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनको पता चले कि ना ये बालिका कौन है। Then he starts reciting slokas, उसके बाद नारद मुनि श्लोकों का उच्चारण करना शुरू which is करते हैं। coming from his heart. हृदय से उनके श्लोक आ रहे हैं। And those slokas actually became a sutra, which was called Narada Bhakti Sutras, और which वो were the occasions of Srimati Radharani's appearance by Sri Narada. तो वही जो श्लोक हैं वो बाद में सूत्र बने जिसे कहते हैं नारद भक्ति सूत्र, जो कि बताते हैं श्रीमती राधा रानी की महिमा बताते हैं जब वो प्रकट होते हैं। When Srila Prabhupada was here, that was one of the first scriptures he wanted to translate and give purports on, Naradi Bhakti Sutras. जब श्रील इस जगत में थे तो नारद भक्ति सूत्र ऐसे पहले शास्त्र थे जिनके ऊपर जिसका वो अनुवाद करना चाहते थे, उसके ऊपर अपनी टीका देना चाहते थे। So Prabhupada did 13 verses. 13 श्लोक प्रभुपाद जी ने उसके But then he stopped तात्पर्य दिया, फिर रुक गए। and he said, I think we should give nectar of devotion first. प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे लग रहा है भक्ति रसामृत सिंधु को पहले प्रदान करना चाहिए। And then he switched and he translated and also gave commentary on Rupa Goswami's commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu. तो श्रील प्रभुपाद जी ने फिर भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर जो श्री रूप गोस्वामी की टीका है उसको हमको प्रदान किया। So the ecstasy that Narada was feeling came out in the form of that great sutra, Narada Bhakti Sutras. You can read that. नारद मुनि के हृदय में जो आनंद था वो नारद भक्ति सूत्र के रूप में प्रकट हुआ। आपको इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। Narada
And so he circumambulates the cradle and he's singing, he's reciting these different verses from his sutra. तो नारद मुनि जो हैं वो उस झूले की परिक्रमा करते हैं जिसमें श्रीमती राधा रानी बैठी हैं और परिक्रमा करते करते आनंद में श्लोक भी गाते जा रहे हैं। Rishabhanu was thinking, this sadhu is going mad. हर What happened? वृषभानु राजा सोच रहे हैं कि ये साधु तो पागल होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है। After Narada pays his obeisances and immediately he leaves. उसके बाद नारद मुनि प्रणाम अर्पित करते हैं और फिर तुरंत चले जाते हैं। And then of course right after that they decide to have a ceremony in honor of Radharani's appearance, the new baby. And so they call all the people in the village and they also decide to contact Yasoda and Nanda to bring them. तो उसके बाद इन्होंने सोचा दोनों माता पिता ने कि अभी संतान प्राप्ति के लिए उत्सव मनाया जाना चाहिए। तो सारे गांव वालों को निमंत्रण भेजते हैं और साथ में यशोदा और नंद महाराज को भी निमंत्रण भेजते हैं कि आप भी आइए। So people come, they're all seeing the wonderful new child. Her eyes are still closed. She's very quiet. तो लोग आते हैं और जो नवजात शिशु है उसको निहारते हैं राधा रानी को, लेकिन आंखें अभी भी बंद हैं। And then little baby Krishna comes. उसके बाद छोटे बालक कृष्ण आते हैं। He crawls up to the cradle. कृष्ण जो हैं रेंगते रेंगते जो हैं वहां तक जाते हैं उस झूले तक और ऐसे ऊपर उठ के ऐसे देखते हैं। Not exactly like that, but एकदम इस तरह से नहीं, लेकिन but he knows what's happening. कृष्ण जानते हैं कि क्या हो रहा है या क्या है। So he looks in and he gives a big smile. तो वो झूले में ऊपर चढ़ के झूले के अंदर देखते हैं राधा रानी को और बहुत ही मधुर बड़ी मुस्कान देते हैं And then he grabs her hand और हाथ पकड़ते हैं and she opens her eyes. और राधा रानी अपनी आंखें खोल लेती हैं। ये वो Pass it around. Give it to Maharaj. He knows what to do with it. It's a beautiful picture. So that's a nice illustration of that pastime. When she's called, another name for Radharani is Krishna Mai. तो ये जो है बहुत ही सुंदर इसका चित्रण किया है उस लीला का। और श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है कृष्णमयी। That means Krishna inside, Krishna outside. इसका मतलब उनके अंदर भी कृष्ण और उनके बाहर भी कृष्ण। She knows only Krishna. केवल कृष्ण को ही वह जानती हैं और कुछ नहीं जानती हैं। She wants to see only Krishna. सिर्फ कृष्ण को ही देखना चाहती हैं। She wants to please Krishna. कृष्ण को प्रसन्न आनंद प्रदान करना चाहती हैं। There's one pastime. एक ऐसी लीला है। Radharani and Krishna had made some agreement to meet that evening. राधा रानी और कृष्ण ने एक आपस में वादा किया कि शाम को आज मिलेंगे। And Radharani's waiting. राधा रानी शाम को इंतजार कर रही हैं। Krishna is not coming. कृष्ण आ ही नहीं रहे हैं। He's late. कृष्ण देर से आए। She's thinking, where is he? राधा रानी सोच रही है कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ थे। He's not coming. आ नहीं रहे हैं। She's feeling some distress. राधा रानी को चिंता होने लगी। Lalita shows up. ललिता वहां पे आती हैं। Radha, why are you in distress? राधा इतनी चिंतित क्यों हो? Krishna said he was coming. He's not coming. राधा ने कहा कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा लेकिन आए नहीं रहे। Find out why. पता लगाओ क्यों नहीं आए। Lalita goes. She leaves. She goes looking for Krishna. ललिता फिर वहां से चली जाती हैं, कृष्ण की तलाश करती हैं। And she's thinking, I think I know where he is. तो वो सोचती हैं कि शायद पता है मुझे कहाँ है वो कृष्ण। He's in Sakigan, वो जो हैं the place of Chandramauli. सखी धाम में हैं जो कि चंद्रावली का स्थान है।
And so she goes, and there's Krishna with another gopi. तो ललिता वहां जाती हैं और देखती हैं कि अरे यहाँ तो कृष्ण दूसरी गोपी के साथ बैठे हैं। And she said, "Oh, you rascal! और ललिता देवी ऐसा कहती हैं, अरे तुम एकदम लंपट हो, You look what you did to my mistress." आपने मेरी जो स्वामिनी है उनको धोखा दिया। And then she leaves. और She, ललिता देवी वहां से she चली goes जाती हैं back to tell Radharani what she found. और वो राधा रानी को जाकर बताती हैं कि क्या देखा मैंने। Krishna's now in trouble. अब कृष्ण मुसीबत में, So he's running behind. तो वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बताने जा रहे हैं। He's trying to figure out what excuse he's going to give. तो वो पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या बताती हैं, So मैं क्या बहाना बनाऊं। Lalita tells Radharani what happened. ललिता ने राधा रानी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। And she enters into man. और राधा रानी जो है मान लीला मतलब गुस्सा कर, Anger. गुस्सा। And then Krishna appears. कृष्ण वहां आते हैं, He's trying to explain. कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं, She's not looking at him. लेकिन राधा रानी कृष्ण को देख ही नहीं रही, He's talking, she's not listening. तो सुन ही नहीं रही हैं। कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन राधा रानी सुन ही नहीं रही। Full man. फुल मान, पूरा गुस्सा। And she turns around and leaves. राधा रानी अपना मुंह एक तरफ उस तरफ दूसरी तरफ फेर के वहां से चली जाती है। Now Krishna thinks, what can I do? कृष्ण सोच रहे हैं कि अभी क्या करूं I मैं, have to get back with Radharani. मुझे राधा रानी के पास जाना है वापस। And Radharani, she goes home. राधा रानी अपने घर चली जाती है। She has a bird cage. एक पक्षी का पिंजरा है उनके पास, It's blue in color. वो नीले कलर का है, It's the same color as Krishna. जैसा कृष्ण का कलर है वैसे ही। She throws it तो उस पिंजरे को वो फेंक देती हैं because it reminds her of Krishna, same color. क्योंकि उसको देख के कृष्ण की याद आती है, क्योंकि रंग एक जैसा है। She has a blue sari. एक नीले कलर की साड़ी है, She throws it. उसको भी फेंक देते हैं। And then she thinks, I'm not going to look at the Jamuna either because it's blue. वे सोचते हैं कि जमुना को भी मैं देखूंगी ही नहीं क्योंकि जमुना का रंग भी नीला है। Now Krishna is really in trouble. अब कृष्ण बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। So then he figures, maybe there's somebody who can help me. तो फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं। कृष्ण I सोचते have हैं to go to Vrindadev. मुझे वृंदा देवी के पास जाना पड़ेगा। कृष्ण ने सोचा She knows how to, make solutions to these problems. क्योंकि वृंदा देवी जानती हैं कि ऐसी समस्याओं में क्या करना है। So Krishna goes to Vrinda and explains the situation. She says, yeah, you're in trouble. कृष्ण जाते हैं वृंदा देवी के पास, समझाते हैं स्थिति पूरी। हाँ बोलती हैं, हाँ मुसीबत में तो हो तुम, But I have a plan. लेकिन मेरे पास एक I योजना know, है। I know Radharani is not happy now. मैं जानती हूँ कि राधा रानी खुश नहीं है बिल्कुल। So you dress up as a gopi. तो आप एक गोपी So की they तरह get, वस्त्र पहनो, they get sari, साड़ी, gopi dots. गोपी डॉट्स, No translation for that Good. one. क्या बोलते हैं, कुमकुम, मतलब उस तरह श्रृंगार करो। Mendi बिंदी, मेहंदी, मेहंदी, on the feet, on the hands. हाथों में पैरों में मेहंदी। Beautiful gopi, Krishna. बहुत सुंदर गोपी। And then now you're an astrologer. और आप जो है एक ज्योतिषी हैं। And you go where Radharani, she's with her girlfriends. And you go and you say that you are an astrologer and you came to tell Radharani's fortune. तो आप जो है ज्योतिषी के रूप में जो राधा रानी की सखियां हैं उनके पास जाओ, जब वो उनके साथ हों, और उन्हें बोलो कि मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं बताने आई हूँ कि राधा रानी का भविष्य क्या है। So Krishna is very hopeful. अब कृष्ण को आशा की किरण नजर आ रही So है। he goes. तो वो ऐसा ही करते हैं। Radharani is there with the gopis. राधा रानी गोपियों के साथ बैठी The हैं gopis say, who's that gopi? We never saw that one before. और गोपियां कहते हैं ये कौन सी गोपी आई है, इसको तो पहले कभी देखा नहीं है। Vrinda said, oh, she's a new one. तो फिर बोलते हैं अच्छा अच्छा ये नई गोपी है Astrologer. और ज्योतिषी भी है। Radharani's not happy. राधा रानी लेकिन खुश नहीं है। Well, I think we should tell Radharani's fortune.
तो गोपियाँ सोचती हैं कि राधा रानी का भविष्य इनसे पूछते हैं। Radharani, can we tell your fortune? तो वो बोलती हैं गोपी की राधा रानी मैं आपको भविष्य बता सकती This हूँ। gopi is expert. ये जो गोपी है बहुत ही दक्ष है। All right. तो बोलते हैं ठीक है। So Krishna goes. तो कृष्ण जो गोपी के रूप में है वो जाते हैं। No, he's looking at her feet. He's holding her feet. तो वो उनके चरणों को देख रहे हैं। And then he looks at her hands, the palms of her hands. फिर हाथों की रेखाओं को देखते हैं। He said, I have understood the problem, why she's not happy. तो फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये खुश क्यों नहीं है। She should forgive Krishna. कि इन्हें जो है कृष्ण को अभी क्षमा कर देना चाहिए तभी खुश होंगी। Radharani gets more angry. He says, this gopi is nonsense. राधा रानी और गुस्सा हो जाती हैं, बोलते हैं ये जो गोपी है एकदम बकवास है, Bad astrologer. ये एकदम बेकार ज्योतिषी है। So Radharani is not pacified. Krishna goes away, back to Vrinda. What am I going to do? That failed. राधा रानी खुश नहीं है, कृष्ण भी वापस चले जाते हैं वृंदा देवी के पास, बोलते हैं इस बार ये योजना तो फेल हो गई, अब क्या करना है। Well, Radharani is very charitable. तो ओ कहती हैं वृंदा देवी की राधा रानी जो है बहुत दानी है, So you dress up as sannyasi. तो आप एक सन्यासी का ड्रेस ले लीजिए, So, and you go beg some dakshin from Radharani. कुछ दक्षिणा भिक्षा में लेने के लिए राधा रानी के पास चले जाइए। So Krishna, he dresses up as a sannyasi. अब कृष्ण सन्यासी की वेशभूषा धारण कर लेते हैं, But instead of using the sannyas garment, he uses tiger skin. Looks more like Shiva. तो सन्यासी की वेशभूषा धारण करने के बजाय वो जो है हिरण की मृगशाल पहनते हैं, ज्यादातर उनको देख के लग रहा है कि भगवान शिव जी हैं। And he's walking along, soham, soham. और चल रहे हैं सोहम सोहम कहते हुए जा रहे हैं Sannyasi. सन्यासी के रूप में। And he comes, and all the go, oh, sannyasi has coming, our good fortune. तो जब वो वहां पहुंचते हैं जहाँ गोपियां और राधा रानी हैं, तो सभी बोलती हैं देख के, ओ सन्यासी जी आ रहे हैं, हमारा तो परम सौभाग्य है। Radharani's not happy. Maybe sannyasi can give blessings to Radharani. राधा रानी खुश नहीं है, हो सकता है शायद सन्यासी के आशीर्वाद से खुश हो जाएंगी। Okay. ठीक So है, sannyasi comes. तो सन्यासी जी आ गया वहां पे। Give some blessing to Radha. गोपियां कहती हैं राधा रानी को आशीर्वाद दीजिए आप। Yes, I can see. She needs blessings. तो सन्यासी कहते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ, वो आशीर्वाद प्राप्त हैं। So I bless her to go back with Krishna. तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो वापस कृष्ण के पास लौट जाएं, चली जाएं। And Radharani's thinking, well, it's a sannyasi and you can't disobey a sannyasi. तो राधा रानी सोचते हैं ये तो सन्यासी हैं, सन्यासी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, It's aparad. ये अपराध हो जाएगा। So she thinks, okay. तो वो कहती हैं ठीक है। And so Krishna's happy, तो कृष्ण खुश हो जाते हैं, Radharani's happy, राधा रानी भी खुश हो जाती हैं and Vrinda's successful. और वृंदा देवी सफल हो जाती हैं। That's a beautiful लीला। pastime. ये एक अद्भुत लीला है इस तरह। Radharani's anger towards Krishna is her love for Krishna also. वास्तव में राधा रानी का जो क्रोध है कृष्ण के प्रति, वो उनका प्रेम ही है कृष्ण के प्रति। And so there were so many wonderful, wonderful activities of Radha and Krishna described in the scriptures. Srila Rupa Goswami, Bhagavatam Das Goswami, also Jiva Goswami, many of the great souls. They describe the loving affairs between Radha and Krishna Vrindavan. तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। राधा कृष्ण की जो प्रेममयी जो लीलाएं हैं वृंदावन में, उसका उन्होंने उसके बारे में बताया So है। if we want to perfect our devotional service and qualify ourselves actually to receive the mercy of Sri Vrindavan Dham, we have to really chant the Hare Krishna Maha Mantra. तो वास्तव में भक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक वास्तव में हमें हरि नाम का जप करना है। Golokira Premadana Harinam Sankirtan Ratin Jan Mino Kini Upai. This chanting of the Hare Krishna Maha Mantra brings one
to the perfectional stage of bhakti. ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है, ये व्यक्ति को भक्ति में एकदम सिद्ध अवस्था पे लेकर आता है। So by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who's come to give us the chanting of the Hare Krishna Mahamantra and the process of pure devotional service, one can actually qualify themselves to become a resident of Sri Vrindavan Dham. And Srila Prabhupada mentions this, that this is available through the chanting of the holy name and through the process of pure devotional service. तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु ने आके हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया और भक्ति की विधि प्रदान की, और इस विधि को अपनाने से हम योग्य बनते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद यही समझाते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप और शुद्ध भक्ति में सेवा से जो है हम भगवत धाम जाते हैं, जा सकते हैं। We can pray to Srimati Radharani, please give me the mercy of your holy name. तो हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमें कृपा प्रदान करें। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Any questions? Comments? कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? Radhastami? Question here. Hare Krishna Maharaj. Thank you for the class. I remember one time Srila Prabhupada disciples asked Srila Prabhupada who is stronger, Krishna or Balaram. And Srila Prabhupada mentioned that because Balaram is, resting on Krishna, then Krishna is stronger. So I have a similar question. I don't know if it's appropriate, but who's doing more service, Balaram or Radharani? Who's doing more service, Balaram or Radharani? तो प्रश्न यह है कि एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद कौन ज्यादा बलशाली है, कृष्ण की बलराम? चलो बताया कि बलराम, क्योंकि वो ज्यादा बलशाली हैं और रेसलिंग में कृष्ण को हरा देते हैं। मेरा प्रश्न भी उस तरह ही है, सही है कि नहीं, कि मेरा प्रश्न है कि ज्यादा सेवा कौन करते हैं कृष्ण की, बलराम की राधा रानी? Many of the cowherd boys, not many, some very intimate cowherd boys who are on the higher levels of Sakya Ras, assist in bringing Krishna and Radharani together, such as Sridham, Ujjwala, and Subal. These particular cowherd boys also have the mood of Madhurya Ras, in the sense that they connect Krishna with Radharani and Madhurya Ras. तो कुछ जो ग्वाले हैं, सभी नहीं, कुछ वरिष्ठ स्तर में जो ग्वाले हैं, सख्या भाव में उच्च स्तर पे हैं, वो श्रीमती राधारानी और कृष्ण को पास में लाने में सहायता करते हैं। और जैसे कि श्रीधाम, उज्ज्वल, सुबल, ये जो हैं, ये इनके अंदर माधुर्य रस भी है, क्योंकि ये जो है कृष्ण राधारानी को साथ में लाने का प्रयास करते हैं। So here, this verse, I'll read it again. All the inhabitants of Vrindavan Dham, Krishna says, my mother, father, cowherd boys, and everything else are like my life and soul. And among all the inhabitants of Vrindavan, the gopis are my very life and soul. And among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are the very life of my life. तो इसका अनुवाद एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरे माता, पिता, ग्वाल सखा तथा अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों में से गोपियां तो मेरे प्राण के समान हैं, और गोपियों में हे राधा रानी तुम मुख्य हो, अतएव तुम मेरे जीवन का भी जीवन हो। So all of Krishna's associates, and especially Balaram, give pleasure to Krishna. तो कृष्ण के सारे पार्षद जो हैं, विशेष रूप से जो बलराम हैं, वो कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। But Krishna says here, out of all, Radharani is the life of my life. लेकिन कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि सब जितने भी ब्रजवासी हैं, सब में जो राधा रानी है वो मेरे जीवन का भी जीवन है। Anything else? Any other comments, questions? और किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है?
a very difficult day to ask questions. कठिन दिन है प्रश्न। Thank you very much. Srimati Radharani ki jai. जय Sri Radharani Avirbhav ki jai. Radhastami Maha Mahotsava ki jai. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Sri Sri Radhamadan Mohan ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.